मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़ेरे तमाम नवी वर्ल्ड इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से नामवर माहिर इक्तिसादियात शरीक हैं। इसी मुनासबत से बैरून ममालिक से आए मेहमानों के एजाज में लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में एक शानदार इशाइये का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका लाहौर के जायकों और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के दीवाने हो गए। तफसीलात बता रहे हैं मिसम अब्बास अपनी रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट मैसम अब्बास और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर ऑर्गेनिक विलेज के यहाँ। और यहाँ मेरी मौजूदगी की वजह यह है कि बहुत ही स्पेशल मेहमानों को आज हम यहाँ वेलकम करेंगे। जनाब, मिनहाज यूनिवर्सिटी में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस जारी है इस्लामी बैंकिंग के हवाले से, और पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो मईशत के एक्सपर्ट्स हैं, माहिर मुआशियात हैं, फाइनेंशियल बैंकिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस को यादगार बनाने के लिए और जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनको लाहौर दिखाने के लिए, लाहौर के जो सकाफत है, लाहौर का जो रिवायात हैं उनको दिखाने के लिए लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में मिनहाज यूनिवर्सिटी की जानिब से एक खूबसूरत शाम का एहतमाम किया गया है। शानदार डिनर भी होगा, और ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तानी जो हैं वो कितने ज़बरदस्त लोग हैं, और जो लाहौर है उनकी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में जानी जाती है। सो साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं कि जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, जो यहाँ पाकिस्तान के मेहमान हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, पाकिस्तानी फूड के बारे में क्या कहते हैं। साथ रहिएगा, आपको लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में एक शानदार सा डिनर दिखाते हैं। Thanks to the conference organizers at Minhaj University over here, I got the chance to be here. For the last couple days, I've been to Lahore, and for the first day of the event, it was a great joy. And fortunately, the weather is nice. The people are so kind, and thanks for the whole conference. The whole team as the conference organizers, and the theme of the conference is so timely. I think very comprehensive to discuss various matters under Islamic economics and finance. It's a wonderful conference with very good themes, very current, very timely. They had a very good lineup of speakers, all renowned speakers, distinguished, esteemed faculty, good balance between practitioners, industry players, as well as academic professionals and professors. So I had a chance to be one of the panelists this morning. I really enjoyed my session. I think it was enlightening not only for the students or the participants, but also for us as panelists. Yeah. Pakistan is one of the pioneers in the field of Islamic economics. In this conference, different theoretical issues and practical cases are gathered and discussed, and people from different countries with different backgrounds and perspectives are come all together to discuss different issues. قصه ما شما رو دوست داریم و پیام محبت رو از ایران به شما منتقل می‌کنیم. It has been a very engaging session. We had morning session, we had speakers, yeah, Prof. Dr. Muhayuddin is the one, Hassan Hussein Muhayuddin, right? So his lecture was very much engaging and truly inspiring. Yeah, alhamdulillah. MashaAllah. Pakistan, I used to be staying in Sharjah for 3 years, so I'm very much accustomed to Pakistani culture and food. Alhamdulillah, I love the mutton paya there. I'm yet to taste mutton paya here, just the mutton, I think mutton karahi. And you love the food. Pakistani people is so friendly, alhamdulillah, mashallah. They give you bright smiles and bahut khoobsurat, mashallah. I participated in the conference, and the conference was very insightful with the guest speaker from almost expertise in the Islamic finance industry. So it really relevant for me because my interest is in this particular industry. So yeah, journey in Pakistan is very insightful and interesting.
Pakistan people are very hospitality and they are very loving people. In fact, they are very loving people, very interesting people. In fact, they accommodate us very well. In fact, one thing surprised me about this country is that they will accommodate you, they will share with you, they will happy with you, they will see you, they will hug you in anything. In fact, that is very good people in this country, and I appreciate it for them. And I promise by God's grace, next year I will be one of those who will present, come to this international conference, because I tried Pakistani food? yes, their food is very good. Their food, their rice, even their beef and everything is very lovely people. But one more thing, the Pakistan people, they are very lovely people and they are very good and accommodating people. इस दफ़ा बहुत सारे मौज़ूआत पर बात हुई इस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें से बिलखुसूस एक जो अहम हिस्सा था वो पाकिस्तान के अंदर जो लेबर लॉज की फॉर्मेशन है, जो कि गुज़श्ता 100 साल से चले आ रहे हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिफॉर्म्स की, और फिर इंटरनेशनली जो लेबर लॉज हैं और फिर उन सब को इस्लामिक प्रिंसिपल्स की रोशनी में भी एनालाइज किया गया। इसी तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इमर्जेंस के बाद जो फिन टेक्नोलॉजी के अंदर और इस तरह फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर जो नई ज़रूरियात पैदा हो रही हैं, इसके हवाले से भी जो मुकर्रिरीन और पार्टिसिपेंट्स ने अपने पेपर्स जो हैं वो प्रेजेंट किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी अभी क्योंकि आज पहला दिन मुकम्मल हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कल का दिन भी इसी तरह ही कामयाबी के साथ मुकम्मल होगा। और हमारा मामूल है कि हर साल कॉन्फ्रेंस की जो पहली शाम होती है वो ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तान से बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मौज़िज़ीन होते हैं उनको एक लाहौर की फ़ील और कल्चर से इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी न किसी एक जगह का इंतखाब करते हैं। तो इस दफ़ा हमने ये लाहौर ऑर्गेनिक विलेज डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब के इस खूबसूरत रेस्टोरेंट का इंतखाब किया और यहाँ पर बहुत शानदार डिलीशियस फूड के साथ तवाज़ु की गई और तमाम मेहमानों ने बहुत इन्जॉय किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छी और यादगार यादों के साथ अपने पाकिस्तान से वापस जाएंगे और पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह नेक नामी का बाइस बनेंगे।